श्री नारायण कवचम। प्रिय भक्तों, नारायण कवचम का पाठ करने से संसार का हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है और मनुष्य किसी भी प्रकार के संकट को, बाधा को, मुश्किलों को बड़ी आसानी से पार कर लेता है और मनुष्य का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर होता है। आइए भगवान नारायण कवच का पाठ श्रवण करते हैं। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्ष सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्नीव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रुन् येन गुप्तो जयन्रुधे। श्रीशुक उवाच वृतपुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माह तदिहैकमनाशृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदण्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतशुचिः। नारायणमयं वर्म सन्नह्येऽब्धय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुदरेर्हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादिनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्त मण्गुल्यण्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि शकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखयादिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुध सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्ति मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाशान् दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमख्येवतु विश्वरूप दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारीः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्प स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराह रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याब्धरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथ पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्
सनत्कुमारो वतु कामदेवाद्धयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्या द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्र द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतार मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणु नारायणप्राह्न उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणि देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभ श्रीवत्सधामा पररात्र ईश प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दन दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्ति चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताश गदेशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढिनिष्पिण्ढजितप्रियासि कुष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णयच्चूर्णयारिन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमातृ पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टिन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारासि वरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंषि चर्मञ्जक्षतचन्द्रछाद्य द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्यवा सर्वाण्येतानि भगवन् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयप्रतीपकः गरुडो भगवान् स्तोभच्छन्दोमय प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनस्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि न बुद्धीन्द्रियमनप्राणान् पान्तु पार्षदभूषणा यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितस्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिस्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैस्वरूपैर्न सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षुर्ध्वमधः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंह प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्नीदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेशस्यञ्जसा येन
दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्य साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ समरुधन्वनी तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रिभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतस्तद्य स विमानो ह्यवाक्षिरः सवालखिल्यवचना दस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपा च तक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्यं मृधे सुरान् इति श्रीमद्भगवद्महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नामाष्टमोऽध्यायः।